Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Kids Planet with Urwa-til-Wusqa, where we think together, explore the universe, and most of all, enjoy learning. So, हम साइंस वर्ल्ड के टेल ऑफ द यूनिवर्स पे थे. हमने उसका फर्स्ट चैप्टर स्टैटिक यूनिवर्स प्रिजम्पशन खत्म कर लिया है. We will be starting theory of the dynamic universe, unit 2 today. So, हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया कि जो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है और डार्क नाइट स्काई पैराडॉक्स थ्योरी है वो हाईलाइट कर रहा है ड्रॉबैक्स ऑफ द स्टैटिक यूनिवर्स थ्योरी. लेकिन टिल द 20th सेंचुरी ये कभी सजेस्ट नहीं किया गया कि यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रही है या कॉन्ट्रैक्ट कर रही है. इन 1929 एडविन हबल ने एक लैंडमार्क ऑब्जर्वेशन की जो कि ये है कि जहां भी आप देखेंगे जो डिस्टेंट गैलेक्सीज हैं वो रैपिडली हमसे दूर जा रही हैं. दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रही है. इसका ये भी मतलब है, इससे ये भी प्रूव हो रहा है कि पहले जो है अर्लियर टाइम्स में ये जो ऑब्जेक्ट्स थे बेसिकली ये सारा मैटर था, ये सब कुछ क्लोज टुगेदर होगा. So let's start the first topic of the second unit, which is the Hubble-Lemaitre law. Edwin Hubble मेरे हिसाब से he should be crowned as the founder of modern cosmology. उन्होंने जो एक मैजिकल स्टेटमेंट दी, उन्होंने हमारे दुनिया के कॉन्सेप्ट को चेंज कर लिया. और उन्होंने क्या किया? He pulled us out from the old Aristotelian universe, which is actually a nutshell, and he brings us to the new universe, which is expanding. Hubble ने ये फैक्ट अनवेल किया कि we live in an expanding universe, जहाँ पे हर गैलेक्सी किसी और गैलेक्सी से दूर जा रही है. ये एक रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी थी जिसको हबल्स लॉ से जाना गया कई साल तक. लेकिन 2018 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने वोट किया कि हबल्स लॉ को रिनेम किया जाए एज Hubble-Lemaitre लॉ. ये लॉ जनरली ये स्टेट करता था कि द मोर डिस्टेंट द गैलेक्सी द फास्टर इट इज मूविंग अवे फ्रॉम अस. इस छोटी स्टेटमेंट ने ब्लास्ट कर दिया हमारे एक नटशेल ऑफ द यूनिवर्स को, एंड इट गेव बर्थ टू द मॉडर्न आइडियोलॉजी ऑफ एन एक्सपैंडिंग यूनिवर्स. Honestly saying, ये जो आइडिया है एक्सपैंडिंग यूनिवर्स का, it fascinates me way more than an idea of a boring static universe. For a moment, close your eyes and feel this growing universe. It is a very amazing feeling. Now think about it. Everything is getting away and the universe is growing and growing. So we must thank Hubble to reveal this fact. मुझे लगता है कि सर एडविन हबल का छोटा सा इंट्रोडक्शन ज़रूरी है, नेसेसरी है, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें उस हिस्ट्री को जो कि पीछे है उनकी माइंड ब्लोइंग डिस्कवरी के. एडविन हबल एक मल्टी टैलेंटेड आदमी थे और 1889 में पैदा हुए. 1919 में उन्होंने एक्सेप्ट की एक पोजीशन एट द प्रेस्टिजियस माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी जो कि कैलिफोर्निया में है, और वो वहीं तक रहे जब तक उनकी फौतगी हो गई जो कि 1953 में थी. Shortly before his death, Hubble became the first astronomer to use the newly completed and famous Hale telescope. वो Palomar Observatory में near San Diego, which is in California. वो जो telescope थी, it was 200 inch, basically 5.1 meter, and it was among the largest telescopes in the world. एडविन हबल ने बहुत ही बड़ी और सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन की एस्ट्रोनॉमी में, और एज एन एक्नॉलेजमेंट टू हिज कंट्रीब्यूशन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेलीस्कोप बिफोर जेम्स वेब टेलीस्कोप bears his name, which is the Hubble Space Telescope. This is the picture of the Hale telescope at the Palomar Observatory near San Diego, California. It is 200 inch, 5.1 meter, and it was among the largest in the world, as we had discussed. This is the picture of Sir Edwin Hubble. I think it's better that we start the first subtopic of the first topic, which is the concept of multiple galaxies.
सो कुछ अर्सा पहले साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉमर्स ये सोचते थे कि जो पूरी दुनिया है इसमें सिर्फ एक ही गैलेक्सी है, हमारी अपनी मिल्की वे। लेकिन इन 1920s हबल was among the first astronomers to realize that there is a universe of galaxies beyond the boundaries of our own Milky Way. What an astonishing realization! तो अगर उनको इम्प्रूव करनी थी अपनी ये बात, तो he needed to find measure the distances to the other galaxies जो कि बहुत दूर है, unlike nearby stars. तो इनको measure करने के लिए of course we had no direct method, so Hubble had to use an indirect method to measure these distances. He found the indirect method, and the method was to calculate the distance from the observer by using the luminosity. Luminosity means light radiated and the brightness of a stars. Uh, as the apparent brightness of a star depends on two factors: luminosity and the distance from an observer. And the distance from the observer. अगर हम करीब के स्टार्स की बात करें तो हम उनकी अपेरेंट ब्राइटनेस और द डिस्टेंस के पास अगर हम वो हो हमारे पास, तो हम लुमिनोसिटी वर्कआउट कर सकते हैं। और फिर इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास लुमिनोसिटी और ब्राइटनेस ऑफ द स्टार्स है तो वी कैन वर्क आउट द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर। सो दैट वाज द इनडायरेक्ट मेथड। हबल ने ये नोट किया कि जो सर्टेन टाइप से स्टार्स के उनकी हमेशा जो है सेम लुमिनोसिटी होती थी, अगर वो हमारे लिए इतने करीब हैं कि हम मेजर कर सकें उनके। इसलिए उन्होंने ये कहा कि अगर इफ वी फाउंड सच स्टार्स इन एन अदर गैलेक्सी, हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि दे हैव द सेम लुमिनोसिटी एंड थस वी कुड कैलकुलेट द डिस्टेंस टू द गैलेक्सी। if we could do this for a number of stars जो कि एक ही गैलेक्सी में हो, देन हमारी कैलकुलेशंस हमेशा हमें सेम डिस्टेंस देंगी एंड वी कुड ट्रस्ट और वी कुड ट्रस्ट और एस्टिमेट। इसी तरीके से उन्होंने ये फिगर आउट किया कि हम किस तरह से डिस्टेंस निकाल सकते हैं गैलेक्सीज का, एंड यूजिंग दिस मेथड ही फिगर्ड आउट अबाउट 9 different galaxies. That's all for today. Thank you.